Hello everyone, welcome back to Vital Nursing Note. Today we are going to understand the menstrual cycle, an important topic in the reproductive health. So let's get starting. Definition of the menstrual cycle. Menstrual cycle, also known as periods or menses. Menstruation is a monthly discharge of bloody fluid containing endometrium cells, granular secretion and blood cells, lasted for 3 to 5 days. Menstruation every month 3 to 5 days ब्लड डिस्चार्ज होता है इन वुमन। ओके, जो ब्लड डिस्चार्ज होता है उसके अंदर कौन से कंटेनिंग होती है? एंडोमेट्रियम सेल्स, ग्रेनुलर सिक्रेशन एंड ब्लड सेल्स। एवरेज लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की साइकिल होती है बट वेरियस फ्रॉम 21 टू 35 डेज विद शॉर्टर एंड द लॉन्गर साइकिल। जो 21 है वो शॉर्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड 35 डेज इज अ लॉन्गर menstrual cycle. You know about what is menarche or menopause? Menarche, a woman first menstruations typically occur around age 12. Okay, first menstruation को हम क्या बोलते हैं? menarche. Definition of menopause जो menarche के opposite है. End of woman's reproductive phase commonly occur between ages 45 to 55. Age of the menopause is largely the result of genetic. ओके, जो मोनोपोज है उसमें क्या होता है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। ओके, एज बिटवीन 45 टू 55. एंड हाउ टू डायग्नोस मोनोपोज? मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज एब्सेंट फॉर 12 मंथ। ओके, 12 मंथ तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट होती है, तभी हम उसे मोनोपोज बोल सकते हैं। Phase of menstrual cycle. There are 4 phases. First, menstrual phase 1 to 5 days. Second, follicular phase 1 to 13 days. Third, ovulatory phase 14 days. Fourth, secretory or luteal phase, also known as progesterone phase 15 to 28 days. This figure 4 easy to understand menstrual cycle. First 5 days is periods. Then follicular phase 1 to 13 days is follicular phase, 14 ovulations, then 15 to 28 days is luteal phase. Now let's start it menstrual phase. First phase of menstrual cycle, which started on the first day of bleeding and the lasted till 5 days. जो menstrual phase है वो first day to 5 day तक रहता है. During this phase the uterus shed its lining which result of the menstrual bleeding. जो menstrual phase है उसके अंदर क्या होता है? एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक डाउन होती है, उसकी वजह से menstrual bleeding होती है. ड्यूरिंग दिस फेज जो वुमन है वो क्या एक्सपीरियंस करती है? एब्डोमिनल क्रैम्प. क्यों करती है? बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन एंड द एब्डोमिनल मसल टू एक्सपेल द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड. इट इज द मेंस्ट्रुअल फेज. Second phase of menstrual cycle, follicular phase 1 to 13 days. This phase started on the first day of bleeding and lasts until ovulation. During this phase जो follicle stimulating hormone क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ द फोलिकल्स इन द ओवरीज इज कंटेनिंग एग. ओवरीज के अंदर एग होता है एंड जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो उसे डेवलप करता है. इवेंचुअली वन फोलिकल्स विल बिकम्स डोमिनेंट एंड मैच्योर. उनमें से ओनली वन फोलिकल्स है वो डोमिनेंट एंड मैच्योर होता है एंड अदर्स आर स्ट्रिक एंड डिसअपियर. एंड फोलिकुलर फेज के अंदर यूट्रस डेवलप एंडोमेट्रियम लेयर. थर्ड फेज ओवल्यूटरी फेज. ओवल्यूशन होता है 14वें दिन पे. मैच्योर फॉलिकल स्ट्रक्चर्स एंड एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरीज. ओवरीज में से एग रिलीज होता है. कब होता है? जब मैच्योर फॉलिकल स्ट्रक्चर होते हैं तब. पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट लुटिनाइजिंग हार्मोन दैट कॉज ओवरी रिलीज मैच्योर एग. मैच्योर एग रिलीज होते हैं तब सीक्रेट कौन सा हार्मोन होता है? लुटिनाइजिंग हार्मोन. और लुटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर से. These eventually occur around days 40 of a 28-day cycle.
जब साइकिल 28 डे की होती है तब 14वें दिन पे ओवल्यूशन होता है, बट इट कैन बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दिस रिलीज एग देन ट्रैवल थ्रू द फॉलोपियन ट्यूब्स टुवर्ड द यूट्रस. जो एग रिलीज हुआ है वो यूट्रस तक कैसे पहुंचेगा? थ्रू द फैलोपियन ट्यूब. फोर्थ फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, secretory phase, also known as luteal or progesterone phase, 15 to 28 day. This phase start after ovulation and end the next menstrual cycle. The rupture Graafian follicles from a corpus luteum which produce progesterone to prepare the uterus endometrium for the conceived pregnancy. This phase रप्चर ग्राफियन फोलिकल्स. ओके, रप्चर ग्राफियन फोलिकल्स तो क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है. ओके, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है तो वो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर को प्रिपेयर करता है फॉर कंसीव द प्रेगनेंसी. इफ द एग is not fertilized, the corpus luteum will break down and the level of the estrogen and progesterone will drop, resulting in the start a new menstrual cycle. ओके, एग इज नॉट फर्टिलाइज तो क्या होगा? जो कॉर्पस ल्यूटियम लेयर ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी. इफ एग इज फर्टिलाइज, सो कंसीव द प्रेगनेंसी. दिस चार्ट फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, it is a follicle development, first day to 28 days, menstruation phase, follicular phase, ovulation phase, and last luteal phase. Pituitary or the ovary hormones level, FSH, estrogens, luteinizing hormone, and progesterone, and endometrium cell की शीट बताई है. Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more.